Hello and a very warm welcome. In today's session, we will be focusing on digital transformation and cyber security for MSMEs. टेक्नोलॉजी जब तेज रफ्तार से जिंदगी और कारोबार को बदल रही है, ऐसे में हम डिजिटल फ्रंट पर ट्रेंड्स, न्यूअर अपॉर्चुनिटीज और इनके बीच एसएमईज कैसी स्ट्रैटेजीज पर काम करें, इसी पर मंथन करेंगे. आई एम हैप्पी टू वेलकम तेजस गोयंका, मैनेजिंग डायरेक्टर टैली सॉल्यूशंस. साथ ही मौजूद हैं डॉक्टर अजय डाटा, चेयरमैन यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस स्टीयरिंग ग्रुप UASG एंड को चेयर ICT कमिटी FICCI. आप दोनों का ही शुक्रिया. थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस. Ajay ji, technology has changed many aspects of human life. The way we live, we communicate, the way businesses are being done and much, much more. आगे चलते हुए क्या आप मानते हैं 5G से एक नए एरा की शुरुआत होने वाली है और उसके क्या मायने होंगे बिजनेसेस के लिए? The world is going to witness a quantum change, I believe, and I think हम सब लोग एग्री करेंगे कि जो अभी ये PM मोदी जी ने 5G ऑक्शन को अलाउ किया है in July, and total 72 gigahertz of spectrum with a validity of 20 years will be put to auction. What it means? It means a lot. It will impact every person's life. There is no doubt about it. Why? Because as we're talking to Tejas, connectivity becomes a very important factor. Digital adoption becomes an important factor. And this is the root of digital adoption because everything will travel. If you are watching a movie on Netflix, it's traveling, data is traveling. At how fast can travel? Ajay ji, as compared to 4G, 5G is expected to be 10 times faster. इससे आप मानते हैं स्मार्ट फैक्ट्रीज को काफी बूस्ट मिलेगा? 5G स्पेक्ट्रम जो है ना वो बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है और बहुत बड़ा इम्पैक्ट कवर करेगा. लो फ्रीक्वेंसी से हाई फ्रीक्वेंसी तक 600 मेगाहर्ट्ज, 700 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज is a low frequency. It will go up to the high of 26 gigahertz. Frequency bands are expected to be utilized by telecom services. And एक OFDM टेक्नोलॉजी होती है उसमें, ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग. उसमें जो डेटा है वो मल्टीपल चैनल्स के थ्रू, मल्टीपल रूट्स के थ्रू एक आदमी के पास पहुंचता है. And that is where the speed and the data transmission increases because data is not coming from one place, it is coming from many places and they're getting combined. That is the technology of 5G is. It is 10 times higher. Imagine that your stethoscope is in your heart and it can be heard at the same second at some place remotely. The amount of data which can transmit, considering metaverse, considering the VR and AR and AIs in the world, this all things will make a huge quantum jump in our daily life. यानी बदलाव की हवाएं, winds of change देखी जा रही हैं, जो बहुत कुछ बदल देंगी. अजय जी, as you were mentioning about 5G, in fact 5G will be crucial for the future development of self-driving vehicles as well. यानी कुल मिलाकर 5G से काफी हलचल हो जाएगी, काफी एक्शन देखने को मिलेगा क्योंकि ये बहुत कुछ बहुत तेजी से बदल देगा. ऐसे में आप स्मॉल बिजनेसेस को क्या कहना चाहेंगे? How should they move ahead in this fast changing world? One is technology driven business, one is technology business. Technology enabled or technology. What you are referring to a technology driven business. टेक्नोलॉजी के अंदर जब भी क्लाउड कंप्यूटिंग की तेज से बात कर रहे थे आप, ऑन डिमांड कंप्यूटिंग जितना चाहिए उतना ले लीजिए. तो कंप्यूटिंग तो हो गई, क्लाउड पे सर्वर्स आ गए, रैम आ गई एंड यू कैन आस्क एज मच एज यू वांट ऑन डिमांड. एक सेकंड बाद आपको 8 CPU 16 GB रैम चाहिए आपको मिल जाएगा. हाउ यू विल कनेक्ट टू द सर्वर इज व्हाट 5G विल गिव यू एट अ वेरी हाई स्पीड. मैसेज टू SME इज वेरी सिंपल. द थिंग्स विल बी इंपैक्टेड faster than you can think, sooner than we can imagine, and it will impact every business we can imagine. No business will be left away from impact of 5G in the future. So we need to be ready with the fast changing environment of networks availability, speed availability, the technology is being available, because otherwise if you do not adopt the technology the fastest way, it is going to make a huge dent and which may be irrecoverable. तेजस जी पर जाने से पहले एक और पहलू अजय जी आपसे जानना चाहेंगे. साउथ कोरिया became the first country to roll out 5G network for businesses B2B. इसमें भारत के लिए क्या learnings हैं? We are able to create indigenous 5G and with a more matured way because we have learned from the mistakes, we have learned from the experiment from what is working, what is not working. So India is very
well positioned from the early mistakes. Early mistake करते हैं तो early adoption भी करते हैं, लेकिन अब हम चूंकि adoption second stage पे कर रहे हैं, तो we have learned quite the lessons. Which spectrum is the perfect one, where we have a better power management on the devices. Imagine that the prediction on using 5G is the phones are going to have better battery life. Why? Because the work which you try to do, let us say downloading a 1 GB file on a phone, downloading the data, downloading your emails is going to be more faster. So the computing and the RAM is going to consume less for lesser time. And thus the battery life will grow from battery life for discharge will grow from 8 hours to 16 hours and 24 hours. This is the kind of discussion which is happening. But this has been learned now from the Korean experience. Ajay ji, what is the latest on the multilingual internet? इससे MSMEs के साथ उनकी लोकल लैंग्वेज में कनेक्ट करना आसान हो जाएगा. 500 मिलियन लोग जो हैं वो अभी इंटरनेट पे नहीं है. अगर किसी का भी बिजनेस ऑनलाइन बेस्ड है, डिजिटल बेस्ड है, तो जो नई अभी कस्टमर बेस बढ़ रहे हैं वो सब नए लैंग्वेज बेस्ड कैटेगरी में बढ़ेंगे, जिनको हर कुछ अपनी लैंग्वेज में चाहिए. इट इज लाइक अगर कोई जना आप कितनी भी इंग्लिश जानते हैं, अगर आपको चाइनीज में कंटेंट दे दे या चाइनीज में वेबसाइट दे दे, उसका यूआरएल चाइनीज में दे दे, हम अनकंफर्टेबल हो जाएंगे. इट कुड बी ए गवर्नमेंट ऑथेंटिक वेबसाइट. सेम इज विद द लैंग्वेज. वी मस्ट गेट रेडी अवरसेल्फ फॉर मल्टीलिंगुअल इंटरनेट, मल्टीलिंगुअल यूजर्स इन द कंट्री. They are going to come back with the email address in the language of their choice. That's going in the countries very, very quickly. And people will have email address in the language of what they speak. And all the 22 languages are now enabled by Government of India, and email addresses are being provided in that. Content is being pushed. Government of India has created a policy that all the websites, all the policies which are going to be announced are going to be made at least in 3 languages. Hindi, English, and a regional language of that state. So the word is moving, government is pushing that very hard, and I think it will impact also almost everyone, every business who is not understanding right now about the new kind of customers coming in. They will also come in into the system with new identities which they have been not seen before. That's all the time we had. Tejas Goyanka, Managing Director, Tally Solutions. Dr. Ajay Dara, Chairman, Universal Acceptance Steering Group, and co-chair ICT Committee FICCI. आप दोनों का ही शुक्रिया. थैंक यू.